Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the cytoplasm. So let's move to the classboard. So dear students, cytoplasm. Cytoplasm, the material a gel-like material present between nuclear membrane and the plasma membrane is called cytoplasm. Clear? तो सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके दरमियान जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ है, जो कुछ भी पड़ा हुआ है, दैट प्रोवाइड्स द स्पेस फॉर द ऑर्गेनेल्स दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. सो ये एक सेमी लिक्विड मटेरियल है, जेल लाइक मटेरियल है मोस्टली. सो कुछ हिस्सों में से ये ट्रांसपेरेंट है, कुछ हिस्सों में ये ट्रांसलूसेंट है. तो वो अभी आगे चलकर हम उसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से कौन से एरियाज जो हैं इसके ट्रांसपेरेंट हैं, कौन से ट्रांसलूसेंट हैं. द साइटोप्लाज्म. क्लियर? नाउ द पार्ट्स of cytoplasm so basically we can divide the cytoplasm into two parts. The first part is the solution part, which contains the solution, and the second is the suspended part, which contains the materials or the organelles suspended between them. So first of all, the solution part. Of cytoplasm. So as far as solution part is concerned, the soluble part of cytoplasm is called cytosol. That is called cytosol. Important short question. So the cytosol provides the ground substance of the cytoplasm. Clear? ग्राउंड सब्सटेंस समझते हैं. मीन्स कि जैसे इन स्टेडियम
So the material which is present inside, जिसके ऊपर वो प्लेयर्स चल रहे हैं, मट्टी जो होती है वो सारा ग्राउंड जो है ग्राउंड लेवल जो होता है मट्टी या वो फर्श, सो दैट इज बेसिकली ग्राउंड लेवल. सो इसी तरह से सेल का जो ग्राउंड है दैट इज फाउंड बाय द साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में कौन सा हिस्सा है जो उसका साइटोसोल है, जो सॉल्युबल पोर्शन है. क्लियर? द cytosol, as it is soluble portion, the cytosol consists of 90% water. Clear? And the dissolved substances. और उसमें मज़ीद उसमें मौजूद हैं dissolved substances. And it forms two types of further solutions. Cytosol it forms true solution. It has true solution as well as colloidal solution. तो केमिस्ट्री में डियर स्टूडेंट्स आपने ये सॉल्यूशंस पढ़े होंगे, ट्रू सॉल्यूशंस एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस. इनके डिटेल्स यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लियर करूँगा आपको. सो द ट्रांसपेरेंट solution is called as, it is the transparent solution. It has dissolved small particles. छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर और वो मुकम्मल तौर पर डिजॉल्व होंगे जिसकी वजह से ये ट्रांसपेरेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल द some salts and amino acids here, and some vitamins and some ions, clear, as well as some ions. So these, especially the polar ionic substances. तो ये सोल्यूशन जब साइटोसोल बेसिकली क्या है, सॉल्युबल पार्ट, और उसमें दो तरह के सोल्यूशन मौजूद हैं, ट्रू सोल्यूशन और दूसरा कोलाइडल सोल्यूशन. ट्रू सोल्यूशन किससे बनेगा, जब इस वाटर के अंदर 90% वाटर के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स इसके अंदर डिजॉल्व होंगे, सो दे विल फॉर्म द ट्रू सोल्यूशन. एज फार एज द कोलाइडल सोल्यूशन इज कंसर्न्ड, दैट इज बेसिकली द ट्रांसलूसेंट सॉल्यूशन. मतलब कि मुकम्मल तौर पर इसमें से लाइट पास नहीं कर सकती, हल्का हल्का नजर आता है, दैट इज कोलाइडल सोल्यूशन. इट कंटेन्स लार्ज पार्टिकल्स most of which remain suspended. Clear? For example, the proteins and lipids and carbohydrates. So as they are not clear, these are large molecules, they will remain suspended in the solution and it forms the कोलाइडल सोल्यूशन. इन दोनों में फ़र्क ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसलूसेंसी का है. टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा था केमिस्ट्री में. ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें से लाइट पास कर सके वो ट्रू सोल्यूशन कहलाते हैं, जबकि कोलाइडल सोल्यूशन चूंकि इनमें लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये सही तरह से हल नहीं होते, उनके अंदर रिजॉल्व नहीं होते, इसमें से आप लाइट पास करेंगे तो सही तरह से लाइट पास नहीं कर पाएगी. सो दैट आर कॉल्ड एज द कोलाइडल सोल्यूशंस. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, जो कोलाइडल सोल्यूशंस हैं, द कोलाइडल सोल्यूशन which is formed by water plus large molecules, it is further divided into two parts. It may be sole
It may be gel. It may be sol or gel. It is water plus large particles. It's key. The colloidal solution, clear? The sol is non-viscous. मतलब कि ये इतना गाढ़ा नहीं है. विस्कस किसे कहते हैं? किसी भी समझ जो गाढ़ा हो, ज्यादा हो. जबकि जेल, that is viscous. Clear? Or that is more viscous as compared to the sol. The sol is usually present near the nuclear membrane or towards the nuclear membrane, while the gel part of the colloidal solution, it is usually present near the plasma membrane. Clear? Near the plasma, उस साइड पे होगा. It means कि अगर इसको हम कहें, this is central in position, while it is peripheral in position. Clear? So that is what we call as a cytosol. Now, the suspended part, number 2, is the suspended part. Dear students, अब इसमें मौजूद हैं, it consists of this portion or this part of cytoplasm. It consists of the cell organelles. For example, Golgi apparatus or the ribosomes or the mitochondria or chloroplast, etc., etc. So what we call as the suspended part of the cytoplasm. Now, dear students, there are two terminologies which are very, very important regarding the cytoplasm, as we have studied cytoplasm and plasma membrane. So there is a term which is discussed in this topic, that is protoplasm. Protoplasm. So remember one thing, very, very easy to remember, that is if the nucleoplasm plus cytoplasm is equal to protoplasm, or in other words we say the living matter of the cell. Okay? The living matter of the cell. While इसी के contrast में एक और term है, that is protoplast. इन दोनों में difference आपको पता होना चाहिए, protoplast. So the nucleoplasm means the nucleus, जो न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स है उसका साइटोप्लाज्म है, प्लस द साइटोप्लाज्म प्लस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. That is equal to protoplast. But remember this thing,
The protoplast is the terminology which is used for those cells which contain cell wall. अगर सेल वॉल को रिमूव कर दें तो बाकी जो कुछ नीचे बचेगा उसे भी प्रोटोप्लास्ट कहते हैं. मीन्स इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेल वॉल माइनस द सेल, सो द रिमेनिंग इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लास्ट. उसके नीचे फिर यही तीन चीज़ें बच जाएंगी. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म उसमें बच जाएगा. क्लियर, इस तरह से भी इसको. तो ये टर्म्स ऐसी हैं जो कि अक्सर कंफ्यूज हो जाती हैं, तो इनको ज़हन में रखना है. न्यूक्लियर प्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, दैट इज प्रोटोप्लाज्म. और अगर द प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज बिकम्स द प्रोटोप्लास्ट. Here is the diagram of a typical animal cell. Here, and there is a nucleus which is bounded by nuclear membrane, and so I'm dividing this portion into two. So this is the plasma membrane, and this is the gel, and this is soul. This region is soul, and this region is gel. Or that is basically ये सारा जो region है, that is termed as this one. All this is called termed as the cytosol. Clear? और इसके अंदर अब मौजूद हैं the organelles like mitochondria or like this. ठीक है, तो ये सारा कुछ अब क्या कहलाएगा, दैट इज द साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म और साइटोसोल अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं करें. साइटोप्लाज्म बेसिकली इट इज जस्ट अ स्पेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके दरमियान जितनी भी ये सारी स्पेस है, दैट इज साइटोप्लाज्म. और उसके अंदर जो मैट्रिक्स बन रहा है, जो उसका सॉल्युबल पोर्शन है, मतलब कि जो उसका ग्राउंड सब्सटेंस है, इस सब को कहते हैं साइटोसोल. अब साइटोसोल क्या है, द सॉल्युबल पोर्शन. और सॉल्युबल पोर्शन को हमने कहा कि उसमें ज़्यादातर क्या मौजूद है, 90% इट कंसिस्ट ऑफ वाटर. और इसमें साइटोसोल में 90% वाटर प्लस डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं. तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, और उसकी वजह से जब उसके अंदर सब्सटेंसेस ऐड होंगे, इट बिकम्स अ सोल्यूशन. तो दो तरह के सोल्यूशन यहाँ पर बन रहे हैं, एक तो ट्रू सोल्यूशन और दूसरा कोलाइडल सोल्यूशन. जब इस 90% वाटर में ज़्यादातर जब छोटे छोटे सब्सटेंसेस हल होंगे, वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे. सो दिस बिकम्स अ ट्रू सोल्यूशन, इट इज़ ट्रांसपेरेंट. जब वाइल द ट्रांसलूसेंट और द कोलाइडल सोल्यूशन इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन इट कंटेन्स द लार्ज पार्टिकल्स, जो कि उसके अंदर आमतौर पर मिसिबल या उसमें डिजॉल्व नहीं होते, सस्पेंड रह जाते हैं. और दूसरा जो कोलाइडल सोल्यूशन वो फर्दर तो सोल एंड जेल. सोल कौन सा है, ये नॉन विस्कस है, इसमें ज़्यादातर कंटेंट जो वाटर का है, ज़्यादा कंटेंट वाटर का होगा. जेल वाला जो है ये थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द सोल. ये विस्कस है, ये गाढ़ा है, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं इट इज़ विस्कस. और आमतौर पर ये जो सा रिंग नज़र आ रहा है आपको ग्रीन कलर का, ये कहलाता है जेल, यानी कि ये पेरिफेरल रीजन्स की तरफ मौजूद है. इट इज़ प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरल रीजन. जबकि सेंट्रल, ये सेंटर में मौजूद है सारा जो सोल, द नॉन विस्कस. अब डियर स्टूडेंट्स, सस्पेंडेड पार्ट, उसमें सारे ऑर्गेनल्स आ गए, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस आ गया. नाउ फाइनली द फंक्शंस. Of cytoplasm. So number one, it acts or it serves a storehouse for various vital chemicals. क्लियर. तो उनका स्टोर हाउस है, जैसे ग्लाइकोजन जो है ये वाइटल है,
ये ज़रूरत पड़ने पर इसकी कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज और उससे एनर्जी हासिल की जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से लिपिड्स है कुछ, सो दे इनका स्टोर हाउस है, दैट इज द स्टोर हाउस, द साइटोप्लाज्म इसमें स्टोर होते हैं, क्लियर। नंबर 2 इज टू इट प्रोवाइड्स a space for metabolism, और यहाँ पर कौन कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक का जैसे जिक्र हमारी बुक में मौजूद है। फॉर एग्जांपल देयर इज ग्लाइकोलाइसिस डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। दैट इज द कॉमन स्टेप, द फर्स्ट स्टेप बिटवीन in the aerobic as well as anaerobic respiration, in which the glucose is converted into 2 molecules of pyruvic acid. Clear? So this occurs in the cytoplasm. इसी तरह से there is gluconeogenesis, that is the formation of glucose from the non-carbohydrate origin. इसी तरह से glycogenesis and glycogenolysis. Clear? So all these are some various metabolic reactions which are occurring in the cytoplasm. And number 3, that is very, very important, that is cytoplasmic streaming. Cytoplasmic streaming, or which is called as a mass bulk movement or mass movement, or which is also termed as cyclosis. अभी ये क्या डिफरेंस कि साइटोप्लाज्म मुसलसल जो इसका जो ये वाला सोल वाला पोर्शन है, ये ऐसे मूव कर रहा है, हल्के हल्के ये इस तरह से मूव कर रहा है, स्ट्रीम कर रहा है। स्ट्रीम का मतलब होता है हल्के हल्के मूव करना। जैसे आपने देखा होगा जब वीडियो देखते हैं, नेट अगर सही ना आ रहा हो तो वीडियो चलते चलते क्या आता है, उस तरह से राउंड से सर्कल आता है और लिखा होता है द वीडियो इज स्ट्रीमिंग, मतलब कि उसमें मूव कर रही है, अभी उसको चलाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी तरह से साइटोप्लाज्म का जो सेंट्रल हिस्सा है, यानी कि जो सोल पार्ट है, ये इट मूव्स कॉन्टिन्यूसली, ये मूव करता रहता है। और इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड्स मूवमेंट, इट प्रोवाइड्स मूवमेंट to freely floating organelles, क्लियर, जो फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं ऑर्गेनल, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट सेल के उस हिस्से में जाकर ज़्यादा इकट्ठा होगा जहाँ पे लाइट ज़्यादा फोकस हो रही है, जहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है। तो क्या होगा, अगर ये इस हिस्से में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है तो ये इस स्ट्रीमिंग के जरिए मूव करता हुआ, या लेट्स सपोज कि इस हिस्से में लाइट ज़्यादा पड़ रही है तो यहाँ पर ये मूव करता हुआ यहाँ पर आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे द क्लोरोप्लास्ट। सो दैट इज कॉल्ड ए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या इसके कहते हैं मैस मूवमेंट, या इसे कहते हैं साइक्लोसिस। साइकिल के अंदर ये मूवमेंट हो रही होती है, सर्कुलर मूवमेंट हो रही होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा एंड यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साइटोसोल एंड द साइटोप्लाज्म as well as protoplasm and protoplast as well as soul and gel. So hopefully आज का लेक्चर क्लैरिफाई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में with endoplasmic reticulum। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।